Okay, shall we start? So, we have already completed basics of cost audit and company audit provisions, and along with that, we are also done with the professional ethics. I think there is one chart which is left which I wanted to make you write. Okay, make a note of that chart first, then we'll start with this chapter called Company Cost Records and Audit Rules. वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर. ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं. ठीक है, लेंथीएस्ट है, बहुत लंबा चैप्टर है. ठीक है, but good thing is that you are definitely going to get 8 to 10 marks from this chapter. That is for sure. Minimum that many marks you will get. ठीक है, now put the heading first. Disciplinary mechanism, the last topic. Disciplinary mechanism. Disciplinary mechanism. Disciplinary mechanism under CWA Act 1959. If you remember, yesterday we have understood some part of it. As I told you, what is your disciplinary mechanism? So if it is a what do you say, professional misconduct case or other misconduct case relating to schedule 1, it will go to the BOD. First of all, यहाँ पे लिखो disciplinary directorate. Disciplinary directorate. So disciplinary directorate is the first person to whom you can make the complaint. The authority where complaint related to schedule 1 or schedule 2 or both offenses are made. So it is an authority where the complaint related to schedule 1, schedule 2 or both offenses are made. What is the name of the party? Disciplinary directorate. Okay? Disciplinary directorate. Then after further investigation may conclude that member is guilty. It may conclude that member is guilty or member is not guilty. But let me tell you one thing, the case cannot be shut down. Amma, just close that window. That is working. On है. I think on भी नहीं है. Is it on? Cooling नहीं है. ये डमी ऐसी है. वो अपने डमी फोन्स आते ना ऐसा. ये काम कर रहा है ना. दिस वन इज वर्किंग. सारे इधर शिफ्ट हो जाओ. आ जाओ इधर आना तो. ओके. ओके. So everyone, after the further investigation may conclude that member is guilty or member is not guilty. पहले मैं तुम्हें यहाँ पे भी एक छोटा सा एक्सटेंशन है. That part उसके नीचे कुछ भी मत लिखना. Now let's like include in this part. If it member is guilty and offense is related to schedule 1, if the offense is related to schedule 1 or if the offense is related to schedule 2 or both. So if it is related to schedule 1, it will be forwarded to BOD, and in this case it will be forwarded to
DC. It is forwarded to BOD, it is forwarded to DC. Now BOD, after investigation, if guilty, then reprimand the member, cancellation of membership up to 3 months, and fine up to rupees 1 lakh if found guilty. If not guilty, case is closed. Okay. Now when it is forwarded to DC, same thing. After investigation, if guilty, then reprimand the member, may cancel membership permanently, and fine up to rupees 5 lakhs. And if not guilty, then case is closed. Done. Now इसके और भी नीचे फर्दर है. So if member or DD is not satisfied with BOD or DC decision, what sir? Huh? May cancel the membership permanently. Next. Reprimand the member. Reprimand means last warning. Right? Reprimand means last warning. You will give the warning once. Directly you can't take the action. Huh? Maybe that might be his first mistake. And you know that even if you will not reprimand, what is a penalty on the first mistake? Up to 1,000. Subsequent conviction pay, you know, na yesterday. Imprisonment up to 6 months and fine up to rupees 5,000. As if they are putting a lot of burden. So यहाँ पे भी they will give you the warning and they may leave you, or may cancel up to 3 months. वहाँ पे cancellation permanently, fine up to 1 lakh, fine up to 5 lakhs. So here one extra point is, if the member or DD is not satisfied with the BOD or DC decision, then within 60 days, sorry, not within 60, within 90 days, plus 90 additionally, if sufficient reason. So generally within 90 days, you can file an appeal to AA, Appellate Authority. You can file an appeal to AA, Appellate Authority. And this is 90 days. And remember, if within 90 days you forgot to make an appeal to Appellate Authority, don't worry. If you have a sufficient reason of not filing the appeal within the first 90 days, then Appellate Authority may entertain your appeal even after the expiry of 90 days. But you should have a genuine reason for that. After that, Appellate Authority will take care of that. And these are the powers of Appellate Authority. Last point. Powers of Appellate Authority. And let me tell you one thing. Powers of Appellate Authority means his audit is final and
conclusive. No high court, no supreme court further is allowed. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो order is final and conclusive. So what are the powers? Power number one, can cancel the order given above, can confirm the order of BOD or DC, can modify the order, and the most important, can revert the case back to BOD or DC for further investigation. So these are the special powers given to this person. These are the powers of appellate authority. Can revert the case back to the BOD or DC. Agar AA thinks that ki BOD and DC has not done the proper investigation and given the decision in hasty manner, so AA can give the case back to the BOD and DC to do the further investigation so that more clarity can come. Or what are the remaining three powers? Can cancel the order of this, can confirm the order of this, or can modify the order. So these are the powers given to the appellate authority. ठीक है, तो ये होता है अपना पूरा डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, हाउ आवर थिंग्स प्रोसीड अंडर द CWA एक्ट. अब मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला था डोंट राइट एनीथिंग. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो राइट साइड पे क्या हुआ. देखो, once you made a complaint to DC, the DC, if you find guilty, DC will offer you to the BOD and this one DD will offer you to the BOD or DC. But let's say for example, if the DC does not find you guilty, whether the case will be shut down, answer is no. DD does not have the power to shut down the case. If you are not found guilty by DD, the case will be given to BOD again. It will be given to whom? BOD. BOD मतलब BOD authority is having a power to shut down the case. तो अगर BOD को लगा कि yes guilty है and no not guilty, तो in this case can be closed. इस केस में केस कैन बी क्लोज्ड. बट इफ यस गिल्टी है, अगेन अगर वो शेड्यूल 1 का हुआ तो हु विल टेक केयर? BOD. और अगर वो शेड्यूल 2 और बोथ का हुआ तो केस विल बी सेंट टू होम? DC. तो ये पावर BOD के पास है टू शट डाउन द केस. मेजर पावर. That's the reason I told you don't write it over there. That is an extension to that part. ठीक है, तो make sure that this is a total disciplinary mechanism you should know. ठीक है, 1 मिनट करेंगे रिवाइज दोबारा से. प्लीज टेल मी हु इज द फर्स्ट पर्सन टू हुम वी फाइल द कंप्लेंट? DD. DD को कंप्लेंट आया, DD फाउंड यू गिल्टी. व्हाट? इफ इट इज शेड्यूल 1 BOD, शेड्यूल 2 or both, then DC. After that, reprimanding and all those cases, and they will pass the case. After that, if the DD does not like your reprimand or fine or like penalty, then or the member is not satisfied with the order passed by BOD or DC, they can make an appeal to whom? AA within 90 days. Plus 90 days additionally if there is a sufficient reason. AA के 4 powers बताओ. It can cancel the order, confirm the order, modify the order, can send the case back to the DC or BOD for further investigation. Lekin if the DD does not find you guilty in the beginning, can it shut down the case? No. It will forward the case to the BOD. BOD found guilty. If it is schedule 1, BOD will take care. If it is schedule 2 or both, again DC. But if the BOD finds out that you are not guilty, then only the case will be closed. Is it clear? ये आपका पूरा disciplinary mechanism है. So that brings and the conclusion to our topics relating to this chapter called professional ethics. तो इसमें हमने start किया था fundamental principle से, and we followed by 29 clauses divided into 2 schedules, and finally we have done the
दिस थिंग डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म. इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक पूरा सॉर्टेड है. अभी अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, जिसमें लिटिल बिट ऑफ आइडिया यू ऑलरेडी हैव. In this chapter, first of all, let me tell you one thing what we are going to read. We will read some forms. Obviously, not every content of the form. I will just tell you to go through it once. हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ डिस्कशन नहीं है. There are just forms. You should know those forms. Why? Because after getting qualified, when you will be doing the reporting or you will be getting intimated to, जैसे हमने करे थे 4 forms, CRA1, CRA2, CRA3, CRA4. What was CRA1? Cost records. कि what kind of cost records you are preparing. CRA2 कि whether your intimation of appointment to the central government, कि what are your details you have to intimate to the central government. Again CRA2 if you are casual vacancy auditor. फिर CRA3 होता है cost audit report and CRA4 is कि comments of the board plus cost audit report when we forward it to whom? Central government. So those 4 forms and 6 rules we have to discuss in this chapter along with some practicals. ठीक है. प्रैक्टिकल्स जो सेम है उसमें 4-5 प्रैक्टिकल में से 1 or 2 विल डू इट इन द क्लास विच आर सेम. आई विल गिव यू एज अ होमवर्क. और वैसे भी वो मटेरियल में सोल्यूशन विल बी गिवन फॉर दोस प्रैक्टिकल्स आल्सो. तो विल ट्राई टू डू मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स फ्रॉम द मटेरियल इटसेल्फ ओनली. ठीक है. एंड एनीवेज आई हैव द प्रैक्टिकल्स का सोल्यूशन बुक आल्सो, तो विच आई विल प्रोवाइड यू इन द हैंड रिटन नोट्स. ये प्रीवियस बैच के हैं क्योंकि प्रैक्टिकल्स में कोई भी चेंज नहीं है. Practicals are same. What you had in 2016, the same practicals you have in 2022 portion. तो practicals में कोई change नहीं है, सिर्फ theory में change है. Did you get the point? तो पहले समझते हैं कि what is there in this chapter. Point number 1, see the company audit 2000 Companies Act 2013 empowers the central government to make the company audit necessary under section number 148. मेरे को बताना when the cost audit is compulsory. Depends upon whether you are regulated sector or unregulated and on your turnover. Correctly said. So if you are a regulated sector, तो आपका total turnover should be 50 crores or more, and in that turnover your CRA related turnover should also be 25 crores or more. Or if you are in the unregulated sector list B category, 100 crores or more and 35 crores or more. ये हमने already पढ़े हुए हैं. ठीक है. Actually these rules are not recently added. ये added Companies Act 1956 में थे, लेकिन 2014 में जाके ये थोड़े रिग्रेस हुए, मतलब इंपॉर्टेंट बने. तो लुक एट द हिस्ट्री व्हाट इज गिवन. Thus it is a subordinate legislative power of the central government to make the rules of the maintenance of cost records and audit thereof in respect of specific industries. Accordingly, the central government may from time to time several notifications ever since the provisions were made erstwhile in Companies Act 1956 as well as under the current Act 2013. Original rules under Companies Act 1956 were superseded. मतलब the moment 2014 rules came, the rules which were made under Companies Act 1956 in 2011, they were superseded. What do you mean by superseded? Replaced. By which rules? 2014 rules. And companies cost records in 2014 were issued. The current effective rule is Companies Cost Audit Records and Amendment Rules 2019. तो ये 14 में इंट्रोड्यूस हुए, फिर 19 में अमेंड हुए. And now Companies Cost Records and Audit Rules still remains the principal rules. तो इन्हें हम लोग CRA rules भी बोलते हैं, और इसी के अंदर अपने CRA forms भी हैं. Are you getting it? What is CRA full form? Cost Records and Audit Rules. ठीक है. रूल नंबर 1 किसके बारे में है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. तो व्हेन दीज रूल्स, यू ऑलरेडी नो द टाइटल ऑफ दीज रूल्स. व्हाट इज द टाइटल? कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014. टाइटल का मतलब होता है हेडिंग क्या है. व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द रूल्स? तो व्हाट इज द हेडिंग? शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है, ऑलवेज रिमेंबर, सेक्शन 1 ऑफ एवरी एक्ट एंड रूल 1 ऑफ एवरी एक्ट ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. So what is the short title of these rules? Rules names are Company Cost Records and Audit Rules 2014. When they came into force from 30th June 2014. ठीक है, आए थे 1 अप्रैल को बट इंप्लीमेंट हुए थे 30th जून से. तो ये हो गया अपना रूल नंबर 1. तो रूल नंबर 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. तो नाम है कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द विच डेट? 30th June 2014. तो रूल 1 इज ओवर. रूल 2 में सारी क्या है? डेफिनेशंस है. डेफिनेशन में व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन? रूल नंबर 2 एक्ट की डेफिनेशन एंड देन CTA. यस्टरडे समवन वाज आस्किंग
customs tariff act, that is heading. Then cost accounted in practice, इसकी definition क्या है? Who is a cost accounted in practice? The one who is in service or in practice, holding a valid COP, certificate of practice. Who is a cost auditor? The one who is appointed as a cost auditor under section 148. That person is known as what? Cost auditor. What is cost audit report? To be generated in form number CRA3. What do you mean by cost records? To be started preparing by the company having the turnover of greater than equals to how many crores? 35 crores. And all other like form CRA forms की बात हो रही है, Indian accounting standard Ind AS जो आप CFR में पढ़ते हो, and the definition of what? Institute and all other words and expressions used in these rules but not defined in the act in the company's specification or definition details 2014. तो रूल 2 में आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द रूल 1 सो फार. रूल नंबर 3 हमने ऑलरेडी कर लिया था. What is the rule number 3? Cost record. So if your what turnover is greater than equals to how many crores? 35 crores. That makes compulsory for you to start preparing the which records? But does the cost audit becomes compulsory or that is dependent upon rule 4? So what is rule 3C? Application of which records? Cost records. 2 categories. We already know the categories. बताना मेरे को total कितनी industries हैं? 39. 6 are regulated and 33 are what? 6 बता दो, 33 बोलने की जरूरत नहीं. स्टेप फादर एंड डॉटर अपनी होगी शुगर इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री. P stands for petroleum. फादर एंड डॉटर में F stands for fertilizers and pesticides and D stands for drugs and pharma. Have been retained and general threshold limit of turnover is 35 crores or more has been prescribed for companies covered. तो micro enterprises or small enterprises as MSMED have been taken out of the preview. इसका मतलब अगर आप क्या हो SME, small and medium enterprises, तो then in that case cost records are not applicable to you. If you remember, the same thing is also exempted under cost audit. 5 points I made you right. If you are operating from SEZ zone, if you are 100% EOU, right or not? Fair enough. तो SME is outside the preview of which records? Cost records. ठीक है. तो applicability अपने को पता है कि either you are a which company, domestic company or a foreign company. If you are listed under rule number 3, either you are from regulated sector or non-regulated sector engaged in production of specific goods and services. If your overall turnover from all the goods and services throughout the year is greater than equals to 35 crores, that is preceding financial year. What does that mean? 22-23 में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने हैं नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. तो आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक करना है कि वेदर द टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 करोड़, नॉट इन द करंट, क्योंकि करंट इज येट टू बी फाइनलाइज्ड ऑन 31st मार्च. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 4. ये रूल नंबर 4 भी अपने को पता है कि इवन फॉर द रेगुलेटेड सेक्टर्स लाइक टी स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम, ई हो गया इलेक्ट्रिसिटी, P petroleum, D drugs and formula, fertilizers and sugar. Cost audit requirement has been made subject to the turnover base, which is 50 crores for all products and services and 25 crores for individual products and services. For non-regulated, it is 135. But what is this 25 and 35? These are which turnovers? Those turnovers of those goods and services for which cost records are required to be maintained and the both conditions are required to be satisfied. ठीक है, यहाँ पे देख लो, this is the line you have to write. Overall annual turnover during immediately preceding financial year greater than equals to 50 and revenue. अच्छा, ये तो exempted है. Do you remember what are the 5 exemptions I told you? If you are from, ये लिखा हुआ ना, more than 75% of the total revenue is coming in which currency? Foreign currency. And if you are operating from which zone? SEZ zone. And if you are 100% from EOU, or if you are a SME, or if you are having your own power plant and using that power plant for which consumption, so then rule number shall not apply, but rule number 3 will apply. But rule number 3 will not apply to SME, small and medium enterprises. Is it clear?
Now, aggregate turnover of the individual products and services or the services should be greater than equals to what? 25 crores, और यहाँ पे should be greater than equals to what? 35 crores. So that is what rule number 4 is all about. And rule number 5, everyone, maintenance of cost records as per form number CRA1. So requirement to maintain the cost records in form number CRA1 were postponed to the financial year 15-16. Even though when it was introduced 14-15 फाइनेंशियल ईयर में 30th जून 2014 को इंट्रोड्यूस हुआ था, बट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 3 हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय वन फाइनेंशियल ईयर. इट वाज फर्स्ट अप्लाइड इन द विच ईयर? 15-16 फॉर द कंपनीज इन द सम नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स नेम कॉफी एंड टी, मिल्क पाउडर एंड इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी. इफ यू रिमेंबर, हमने पूरी लिस्ट में वो उसको वो भी किया था, सर्कल भी किया था. एम आई करेक्ट? तो ये हो गया अपना वो. एंड रूल नंबर 6 किसके ऊपर है? कॉस्ट ऑडिट के ऊपर. ये तो अपने को पता ही है, कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148. एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर वेयर ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल विल बी फिल्ड अप बाय within 30 days of occurrence, and the company again intimate the same in form number CRA2 within 30 days of such appointment of cost auditor. Right? तो ये थे अपने रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is rule 1 again? Today I'll be leaving you by 3:30. Today I'll be leaving you by 3:30. मेरे को थोड़ा डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, ठीक है? तो बाकी का कॉम्पनसेशन अपन कल कर लेंगे बाय टेकिंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा, ठीक है? तो हाँ, संडे नहीं, अरे भावनाओं को समझा करो. संडे मतलब डायरेक्टली कब मिलेंगे अपन? मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना? तो जल्दी से बता दो रूल नंबर 1 to 6 क्या है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. 2 definitions. 3 cost records applicability. 4 cost audit. 5 maintenance of cost records as per CRA1 except some of the industries in non-regulated sector. And rule number 6 talks about cost audit. Cost audit में same casual vacancy का point they are talking about. तो ये हो गया cost audit rule number 6. अच्छा ये बताओ, when you appoint the cost then also you have to intimate. Before appointment, what are the 4 declarations you make before getting appointed as a cost auditor? Yes, I understood the terms and conditions. We are not disqualified. I'm not breaching my ceiling limit, and me, my partner, my firm is not having any kind of pending cases against us in any authority in India or outside India, either in any court and all. That is what the point number this. What is the next point? Whichever is earlier, matlab. When do you have to file? When do you appoint the cost auditor? Within how many days? 180 days or 30 days from the end of the 180 days, whichever is earlier. And what if he has been appointed? Do we have to intimate to the central government in form number CRA2? And the same form is required when we are intimating the casual vacancy. तो ये देख लो, file a notice of such appointment with central government within a period of 30 days of such board meeting with such appointment is made, and file the notice of such appointment within how many days? 180 days from the commencement of finance. And within how much time period he has to complete the audit? Within 180 days from the end of the financial year in form number CRA3. So you will auditor shall continue in office till the expiry of 180 days from the closure of financial year or till he submits his report. Casual vacancy again will be filled up by board of directors within 30 days, or again we have to intimate the central government in form number CRA2 within submit cost. Okay. पानी देना है थोड़ा. अरे कोई भी पानी दे दो, बंदा निकल जाएगा नहीं तो. कहाँ से लाते हैं अम्मा हॉट वाटर? हाँ, केटल. अच्छा अच्छा, ये 24 आवर्स कोल्ड 24 आवर्स हॉट वाली डीमार्ट की है क्या? हाँ, डीमार्ट से ली है. Okay. Submit the cost audit report in form number CRA3. And cost audit report submitted to the board within how many days? 180. अब board क्या करेगा? Board will pass some comments if any negative remarks kept by the which auditor?
cost audit है, and furnish that to the central government in form number within how many days? Within 30 days. But can this time period of 30 days be extended? If there is an extension given to you in the AGM by whatever the time is given under section number 137, वो वाला extended time will be added in what? 30 days. So it will become that many days. So if you got the extension of 45 days, so this here will become 30 plus 45 will become 75 days. I think everything is revised, whatever we have done so far. Okay? Now let us do these things in detail. What is the form number 1? Forms in which cost records shall be maintained. Now, the form number CRA1 prescribes the form in which the cost record shall be maintained. The form categorizes the requirement of maintaining the proper details as per how many heading? 30 heading. तो भैया ये आपको 30 headings याद करनी पड़ेगी. तो what are the 30 headings? Heading number 1. अरे कहने का मतलब क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट आपको ये पूछ सकता है कि इज दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज कवर्ड अंडर CRA1 और नॉट. You just have to read these 30 headings 1 or 2 times so that at least if you will hear it your own now or see it on your own, you can visualize that in the examination ki whether that particular record is covered under as per CRA1 or not. So we just have to read out the list once or twice. Material cost, what is the next one? Employee cost, then utility, then direct expenses, repairs and maintenance, fixed assets and depreciation, overheads, administrative overheads, transportation cost, royalty. ये क्या होता है? रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ. ये आपके इंटेंजिबल की इनकम होती है. कौन सी? लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव सो मेनी पेटेंटेड फॉर्मूलाज एंड यू हैव गिवन इट टू समवन. जैसे मान लो मैंने कोविड-19 का वैक्सीन बनाया, वो पेटेंट मेरे नाम पे है, बट आई हैव गिवन दिस पेटेंट टू Dr. Reddy's laboratory to use it. Am I correct or not? So I will get the royalty from the Dr. Reddy laboratory. So that royalty records also you have to maintain. Then R&D records. What is R&D? Research and quality control means inspection reports, pollution control expenses, service departmental expenses, packaging expenses, finance cost, any other item of cost. फिर आ जाती है आपकी, अच्छा यहाँ तक तो सारे cost हो गए 17 तक. All costs, different types of costs. Then capacity determination relating to your plant and machinery. कि आपकी plant की कितनी capacity है? Capacity determination that your work in progress and finished goods का stock. Captive consumption. आप कितनी energy produce कर रहे हो and how much you are utilizing it for your production activity. Byproducts and joint products. Adjustment of cost variances when we compare between the budgets and actuals. Do we get the variances? Yes. Next one, reconciliation of cost and ये तो आपका costing में एक chapter भी है, integral and non-integral, right? Then related party transaction. ये क्या होती है? 188, section number 188, related party. Related party basically transactions में problem क्या होती है कि most of the frauds are very easy to be carried out with the help of which party? और आपको पृथ्वी सर ने सेक्शन नंबर 188 में रिलेटेड पार्टी पे बताया होगा कि एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग एंड एसोसिएट, टू कंपनीज हैविंग द कॉमन directors, two companies having the common MDs, there are some audit committee approvals are required. And if you go beyond the audit committee approval, you need to pass this by resolution by the shareholder. तो for that reasons, क्योंकि most of the cases क्या होता है, related party में ALP transactions नहीं होती. What is AMC? Arms length right. And then I think producer ने आपको एक और word बताया होगा, omnibus approval. Have you heard of this? हाँ, यूनानिमस पता है सर. यूनानिमस का मतलब होता है 100% रेजोल्यूशन, जिसमें आपको 100% यस चाहिए होती है. ओमनीबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है, ऑडिट कमेटी पूरे एक साल की अप्रूवल एक साथ दे देती है, फुल 1 year अप्रूवल इन वन ऑर्डर. दैट इज कॉल्ड ओमनीबस अप्रूवल. एंड ड्यूरिंग दैट 1 year, whatever the related party transactions will you need not come back to the audit committee again and again. तो ऑडिट कमेटी जैसे मान लो आज की डेट है, व्हाट इज द डेट टुडे, 12th February, सॉरी 10th February, 11th है आज, 11th है. तो आज 11th है, तो 10th February 2024 तक की सारी अप्रूवल्स एट वन पॉइंट. बट देयर इज अ कैप अप टू 700 crores ऑफ ट्रांजेक्शन. से फॉर एग्जांपल आई एम द ऑडिट कमेटी,
और ये मेरी कंपनी है, और मैंने कंपनी को क्या बोला, अप टू 700 करोड़ in the next 1 year, whatever the related party transactions you will do, you need not come back to me again and again for what approvals. उसे हम लोग बोलते हैं omnibus approval, OMNIBUS, omnibus approval. वो भी related party के अंदर आता है, related party records के अंदर. Then we have expenses or incentives on what, exports, and production records, then sales record, then cost statement, statistical records, records of physical verification and units of. तो अगर मैं तुमसे पूछूं इंडस्ट्रीज कितनी है, 39, रेगुलेटेड कितनी है, 6, अनरेगुलेटेड कितने हैं, फॉर्म्स कितने हैं, 4, फॉर्म्स कितने हैं, 4, रूल्स कितने हैं, 6, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं, 24, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स कितने हैं, 4, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स कितने हैं, 31. हाउ मेनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स, 31. अब समझ में, ये फिगर्स याद करना, 31, 6, 4, because they may ask you directly in the MCQs. How many forms do we have? How many cost records do we have? कितने cost records हैं, 31, और cost auditing, cost accounting standards कितने हैं, 24, cost auditing standards है 4, rules है 6, forms है 4, और industries है 39, जिसमें से 6 regulated and 33 sorted है, 100% sorted. तो ये एक बार लिस्ट आप दोबारा से गो थ्रू हो लेना, सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर यू. एक दो बार लिस्ट पढ़ लोगे ना, ऑटोमेटिकली 20 to 25 तो यू कैन इजीली रिटेन, इफ नॉट 31. अगर एग्जाम में बाय चांस आ गया तो ऑब्वियसली 31 लिखने को नहीं बोलेगा, बोल देगा कि ब्रीफली नेम सम फ्यू कॉस्ट रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट फर्स्ट ईयर. अभी ऑन द स्पॉट भी आप मेरे को 10 to 15 तो नॉर्मली बता दोगे. फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट आएगी, पक्का आएगी. हाँ, एनी अदर कॉस्ट. अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, WIP डिटेल्स, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, सेल्स रिकॉर्ड्स, रिलेटेड पार्टी, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. नो, नो अम्मा, नो, नॉट देयर. ठीक है. कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ये हो गया अपना CRA 1. मेन क्या हो गया, CRA 2. अब CRA 2 क्या होता है, when we are intimating to the government that we have appointed our which auditor, cost auditor. Now what are the details about your cost auditor you have to send? First of all, company का SIN number. What is SIN? Corporate identity. How many of you know how to read the SIN number? आपको मालूम है SIN number रीड कैसे किया जाता है? कभी देखा है SIN number? नहीं देखा? मैं दिखाता हूँ. देखा हुआ है SIN number? रीड करना आता है सर SIN number? अब जैसे ये SIN number है कंपनी का, जो ये U है ना, U रिप्रेजेंट करता है लिस्टेड है या अनलिस्टेड. ये जो नेक्स्ट 5 है इसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री कोड. विच कोड? इंडस्ट्री कोड. TN स्टैंड्स फॉर स्टेट. ये हो गया ईयर. ये हो गया नेचर ऑफ द कंपनी. व्हाट इज दिस? नेचर ऑफ द कंपनी. और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर ये होता है. दिस इज हाउ यू रीड इट. देखो, दीज आर द थिंग्स. दैट इज हाउ द SIN नंबर इज टू बी रेड. पहला अगर L लिख के आया तो इसका मतलब आप क्या हो? लिस्टेड कंपनी. U मतलब क्या हो गया? अनलिस्टेड. नेक्स्ट 5 डिजिट क्या है? इंडस्ट्री कोड. नेक्स्ट 2 स्टेट कोड. नेक्स्ट 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो नेक्स्ट 1, तो एक काम करो, इसका बताओ ये क्या मतलब हुआ फिर? लिस्टेड हो गए. ये इंडस्ट्री कोड कर्नाटका 1963, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. GOI मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये हो गया इसका रजिस्ट्रेशन टाइम. डिड यू गेट द पॉइंट? तो दीज आर द थिंग्स हाउ यू विल डीकोड द SIN नंबर. ऐसे अपन किसी कंपनी, किसी भी कंपनी का SIN नंबर आप डालो सर, कहां पे? mca.gov.in पे जाके यू विल ऑटोमेटिकली गेट द फुल इंफॉर्मेशन. आपको कंपनी का MOA डाउनलोड करना है, AOA डाउनलोड करना है, एनुअल रिटर्न्स डाउनलोड करने हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना है, एनीथिंग यू कैन डाउनलोड. एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इन द mca.gov.in. द मेजर थिंग व्हाट यू शुड नो अबाउट द कंपनी इज SIN नंबर. तो when we are intimating in CRA 2, these are the informations we have to send. But if it is a which company?
फॉरेन कंपनी, तो उसका होगा फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इफ यू आर अपॉइंटिंग द कॉस्ट ऑडिटर फॉर द फॉरेन कंपनी तो FCRN हो जाएगा, एंड इफ इट इज इंडियन कंपनी सिन नंबर। सेकेंड थिंग, जनरल इंफॉर्मेशन मतलब उसका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अबाउट द विच ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिट। Then products and services to which cost audit relates. Details of all cost auditors what? So will there be a concept of joint cost audit? Can there be a concept of joint cost audit? Yes, हो सकता है। अगर मान लो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल फर्म इज अनएबल टू हैंडल, तो वी कैन अपॉइंट 2 or more cost auditors. So in that case it would be a which audit? Joint cost audit. So details of all the cost auditors appointed and financial year to be covered under the cost audit. Details of previous cost auditor which has not been, अगर ये रिमेंबर कल मैंने आपसे डिस्कशन करी थी कि इट्स ऑलवेज बेटर दैट कि न्यू कॉस्ट ऑडिटर शुड ऑलवेज कम्युनिकेट इन राइटिंग विद व्हाट प्रीवियस ऑडिटर। उसका रीजन क्या था? रीजन बहुत सिंपल था, इफ ही हैज नॉट बीन रीअपॉइंटेड और रिजाइंड और रिमूव्ड, देन एज अ न्यू ऑडिटर यू शुड नो द रीजंस कि व्हाई ही वाज नॉट रीअपॉइंटेड, क्योंकि द सेम misconduct or misbehavior which has happened with him, there's a possibility that that may happen with you. So it's better that कि new auditor should always communicate with the previous auditor. इसलिए हम लोग details of previous auditor भी दे रहे हैं who has not been reappointed. Next one, attachment. क्या क्या attach करना है? ये क्यों attach कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि it is appointed by the board of directors by passing a which resolution, and optional attachment अगर आपको कोई extra information देनी है तो what are the 7 things you need to include in CRA2? And I will show you CRA2 also where we will see all this information. Tell me, what are the 7 things? First of all, the company का SIN number और FCRN number. अगर foreign company है तो ऐसे. Second one, general information about. Then third, products and services for which the cost audit is to be conducted. Fourth one, details of your all the cost auditor. Fifth one, the financial year it is covering. Sixth one, details of previous cost auditor which has not been appointed. And seventh one में BR का copy attach करना है और any other attachment if you would like to do with the CRA2. So CRA1 was all on cost records. CRA2 is all about appointment, intimation to the central government about the appointment of which auditor? Cost auditor. फिर ये आ गया CRA3. What is CRA3? तो obviously ये वाला clause number 7 have been added to the auditor's report as under, मतलब ये वाला amendment है। पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ पहले CRA3 भाई CRA3 ये आ गया अपना CRA1 cost records। इसमें ये देख लो सारे रिकॉर्ड्स है जो हमने 31 अभी लिस्ट ली थी ना, ये है। अब तुम ये करके जाओगे एग्जाम में, तुम्हारी आत्मा वैसे ही बाहर निकल आएगी और तुम ही बोलोगे भगवान उठा ले। ये देखो हाउ मेनी टोटल 31। ये आ गया सेकंड फॉर्म। व्हाट इज द सेकंड फॉर्म? तो तुम्हें घबराना ही नहीं है ये चैप्टर को देख के, क्योंकि आधा चैप्टर तो इसमें वो है जो सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू होना है। गो थ्रू होने से आपको फायदा क्या हो जाएगा? यू विल बी एटलीस्ट नोइंग द फैक्ट दैट कि फ्यूचर में व्हेन दिस फोन विल कम इन फ्रंट ऑफ यू इट शुड नॉट लुक लाइक एलियन टू यू एट दैट पॉइंट, राइट? तो CRA2 क्या हुआ? अपना वही वाला फॉर्म। ये देखो व्हाट इज द फर्स्ट वन? सिन नंबर, ग्लोबल लोकेशन नंबर अगर वो फॉरेन कंपनी है, देन जनरल पर्टिकुलर्स। व्हाट आर द जनरल पर्टिकुलर्स? नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, ईमेल आईडी, फोन, देन डिटेल्स ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑडिटर्स अपॉइंटेड। फिर अपना फाइनेंशियल ईयर for products and services for which the cost audit relates, and next one अपना आ गया ये CTA की हेडिंग अपनी। फिर से CTA क्या था? कस्टम्स। और ये क्या हो गई अपनी? डिटेल्स ऑफ विच ऑडिटर्स? कॉस्ट ऑडिटर। क्यों दिया हुआ नंबर ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स? इन केस ऑफ विच ऑडिट? ज्वाइंट ऑडिट। तो कैटेगरी ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है या LLP। फोर्थ दिख रहा है कुछ? तो इट मीन्स यहीं से प्रूव हो जाता है कि अपन 3 ही जगहों में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म और LLP। ये हो गया आपका डिटेल्स पूरा। फिर हो गया आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, या आपकी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट कोड, देन टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट, आर यू ओरिजिनल और कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि दोनों के केस में CRA2 है, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट फॉर्म और LLP, फाइनेंशियल ईयर टू बी कवर्ड अपना 5th पॉइंट। 6th क्या था? नहीं,
हाँ एक्चुअली सिक्स अपना फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ था वहां पे, और सेवंथ था अटैचमेंट ऑफ विच रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, ये हो गया कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एंड व्हाट ऑप्शन। तो ये अपना हो गया CRA 2, ये आपको यहाँ पे अटैच करने की ऑप्शन मिलती है। तो दिस इज क्लियर कट द इंटरफेस ऑफ द कंप्यूटर विच हैज बीन डाउनलोडेड एंड विच हैज बीन पुट इट हियर, सो दैट दिस इज हाउ द फॉर्म लुक्स लाइक, आपको पता चल जाए। अब अपना आया तीसरा फॉर्म, व्हाट इज द थर्ड। तो इसमें बोल रहे थे क्लॉज नंबर 7 हैज बीन एडिड, ये रहा 7, ये देखो, ये पढ़ो क्या है, डिटेल्ड यूनिट वाइज product or service wise cost statement and schedules thereto in respect of production or service under reference of the company duly audited and certified by me or us or are not kept in the company। ठीक है, ये वाला पॉइंट रिसेंटली ऐड हुआ है, दिस इज व्हाई हियर इट हैज बीन शोन, इट इज एडेड, यहाँ पे यू कैन सी हियर, ये लिखा हुआ ना। So clause number 7 have been added. So what is the clause number 7? Detailed unit wise, product or service wise cost statements and schedule thereto in respect of product or services which have been audited and certified by, or if you did it without any examination, तो are you guilty somewhere? कहाँ पे? अब देखो कहाँ का चैप्टर कहाँ से कनेक्ट हो सकता है ना, यू नेवर नो। तो यू आर गिल्टी अंडर 212 क्लॉज 2 पार्ट 1 शेड्यूल 2। तो ये चैप्टर हमेशा याद रखना, इट विल गो थ्रू आउट योर जर्नी। कहीं पे भी बॉम्ब मार सकता हूं मैं कि ये चीज कहां पे, अगर आपने ये नहीं किया तो आर यू गिल्टी और नॉट, तो उससे आपको एटलीस्ट याद रहेंगे ऑल द 29 क्लॉजेस। नाउ दिस इज द मेजर थिंग अंडर विच योर टोटल फॉर्म इज, ये आपको याद करना है, फॉर्म याद नहीं करना, बट ये आपको याद करना पड़ेगा। व्हाट इज अ पार्ट ए टॉक्स अबाउट general details of which auditor, cost accounting policies, product or service details for the company as a whole। तो part A is the information about company, मैं तुम्हें सिंपल वे में लिखवा दूंगा, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। पार्ट बी में अगर आप कौन से सेक्टर से हो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एवरेज। ये क्या होता है एवरेज? एवरेज का मतलब होता है समराइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? आपकी पूरी कॉस्ट स्टेटमेंट को यहां पे डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, उसको एक समरी करके, जैसे नॉट आइटम वाइज एक समरी बता दो, प्राइम कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री कितनी है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, ऑल दैट इन नॉट इन डिटेल, इन अ समराइज वे। समराइज को अपन क्या बोलते हैं? एवरेज। डिटेल्स ऑफ व्हाट? मटेरियल। ऑब्वियसली ये वाले पॉइंट्स इसमें नहीं आएंगे क्योंकि नाउ यू आर अ विच सेक्टर। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हो तो यू विल फिल अप द पार्ट बी, इफ यू आर बिलोंगिंग टू सर्विस सेक्टर यू विल बी फिलिंग अप पार्ट सी। तो डिटेल्स ऑफ यूटिलिटीज कंज्यूम्ड, डिटेल्स ऑफ व्हाट? इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग expenses। तो टेल मी द 5 points in part A। first of all, part A, which information? General information, and general information about your which auditors? Auditors, cost accounting policies and product and service wise details। तो सेकंड, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से हो तो क्या क्या? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, सेकंड वन एवरेज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट, डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, यूटिलिटीज कंज्यूम्ड एंड द इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अगर आप पार्ट सी से हो तो देन सर्विस सेक्टर। तो पहले का सेम पॉइंट है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी क्या है? सेम, बट इंस्टेड यू आर रिलेटेड टू विच सेक्टर? सर्विस सेक्टर। एंड पार्ट डी, प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिट रिकंसिलेशन, इसके ऊपर अपने को आएगा प्रैक्टिकल। ये है अपना प्रैक्टिकल पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू एडिशन। तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट पे अपने को प्रैक्टिकल से लर्न करने हैं, हाउ यू कैरी आउट द वैल्यू एडिशन। फिर आपके फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेशियो एनालिसिस चैप्टर तो आपके एफएम में भी था, राइट और नॉट? करंट रेशियो, डेट टर्नओवर रेशियो, जीपी रेशियो, डेट बाय इक्विटी रेशियो, तो सम मेजर रेशियोज यू हैव टू डू। एंड ये वाला पॉइंट अगेन विच पार्टी एंड रिकंसिलिएशन ऑफ विच वन। तो ये आपका क्या हो गया? पार्ट 3, CRA 3। तो बताओ CRA 3 में कितने पार्ट्स? अभी से क्रॉस वेरीफाई करेंगे उसके फॉर्म से,
तो व्हाट आर द फोर पार्ट? पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन, पार्ट बी मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट सी सर्विस सेक्टर। तो पार्ट डी में क्या आ गया आपका? अदर इंफॉर्मेशन। अदर में क्या क्या? प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन एंड वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, जो अपना प्रैक्टिकल पार्ट है। फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट वन क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेस। आपको कुछ नहीं करना है सर, एक एक दो दो बार ये पूरे सिर्फ ये ब्लू वाले पार्ट पढ़ लेना। नो नीड टू राइट दिस। तो अभी अपन इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे विद द CRA 3। CRA 3 ये रहा। तो CRA 3 ये हो गया अपना जनरल पार्ट। व्हाट वाज द जनरल पार्ट? जनरल इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑडिटर, ये हो गया। ये वाला पार्ट है अपना पार्ट ए, ठीक है। फिर पार्ट बी किसके ऊपर था? अनेक्स्चर टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये भी आपका पार्ट ए में फर्स्ट वन जनरल इंफॉर्मेशन, सेकंड वन जनरल डिटेल्स ऑफ विच ऑडिटर? कॉस्ट ऑडिटर। थर्ड वन कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड द व्हाट वाज द फोर्थ वन? प्रोडक्ट वाइज और सर्विस वाइज डिटेल्स। उसके बाद विच सेक्टर? पार्ट बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो तो आपकी मेन टॉपिक्स क्या थे? पॉइंट नंबर 1 क्वांटिटेटिव डिटेल्स। तो ये देखो आपकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स है। एंड मटेरियल्स कंज्यूम्ड, यूटिलिटीज कंज्यूम्ड, एब्रिज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट आर द 5? क्वांटिटेटिव डिटेल्स, मटेरियल डिटेल्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, details of utilities consumed, abridged cost statement and industry specific operating expenses। तो ये हो गया अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला पूरा पॉइंट। इसमें देख लेते कहाँ पे दिया होगा सारा। ये रहा एब्रिज्ड, ये रही आपकी एब्रिज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 2। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव डिटेल्स। ये हो गया आपका एब्रिज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट। उसके बाद डिटेल्स ऑफ विच कंज्यूम्ड, रॉ, ये आपका पूरा हो गया डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर नेक्स्ट वन डिटेल्स ऑफ विच कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम एंड डिटेल्स ऑफ विच कंज्यूम, यूटिलिटीज कंज्यूम। एंड फिफ्थ वन डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग। सेम 5 थिंग्स विल बी रिपीटेड इन सर्विस सेक्टर। तो ये हो गया आपका सर्विस सेक्टर। इसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव डिटेल्स। ये क्या हो गया आपका? अगेन आपका abridged cost statement, and this one is your details of material consumed, and this one details of utilities consumed and details of industry specific operating expenses। clear है? और फिर वाला लास्ट वाला पार्ट डी। पार्ट डी में पॉइंट नंबर 1 जनरल प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। और उसके बाद अपना ये आ रहा था प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। थर्ड क्या था? रेशियोज, कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज, हाँ, प्रैक्टिकल पोर्शन, वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब ये आ गया अपना फाइनेंशियल पोजीशन एंड अभी रिलेटेड पार्टी। 6th था तो 5th क्या था फिर? मतलब 5th स्किप कर दो, स्किप नहीं करना है। 7, 6th वन और इसके बाद अपना फॉर्म एंड हो जाना चाहिए। ये हो गया एंड। ये देख लो क्या क्या आएगा तुम्हारा। ये तो CS का है, ये है आपका मेन, योर सिग्नेचर, योर नेम, कॉस्ट ऑडिटर, मेंबरशिप नंबर, सील, डेट। और ये अपना CS का, और ये अपना डायरेक्टर का डिन, CS का मेंबरशिप नंबर, यहाँ डिन अगर डायरेक्टर है तो योर मेंबरशिप नंबर। तो दिस इज व्हाट योर CRA 3। तो CRA 3 में ब्रॉडली स्पीकिंग 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन जनरल, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड एंड फोर्थ अदर्स। तो ये अपना हो गया CRA 1, CRA 2। CRA 1 एक बार पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते तो बाद में कब सर देखेंगे, जब प्रैक्टिस में आएंगे तब देखेंगे सर, अगर जरूरत पड़ी तो पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिया गया कि दिस इज हाउ द, तुमने देखा ना डायरेक्टली इंटरफेस को कॉपी करके आपके सामने डाल दिया
कि मतलब जब आप mca.gov.in पे जाके CRA2 को क्लिक करोगे तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, सो दैट यू शुड नॉट लुक सी की मतलब आई डोंट नो द आइटम्स बिहाइंड दैट, दैट्स व्हाई you just need to learn this part, this blue part, CRA1, CRA2, CRA3। और इंडस्ट्रीज के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब जल्दी बताओ CRA1 में कितने रिकॉर्ड्स, CRA2 में हाउ मेनी क्लॉजेस, 7। क्या क्या थे 7? हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार रीड करोगे अपने आप हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 सिन नंबर और FCRN नंबर। सेकेंड वन general information, product or service details, details of your cost auditors, financial to be covered, and details of your previous। ये वाला पॉइंट अपने को फॉर्म में नहीं दिखा था क्योंकि मे बी यू वर अपॉइंटेड और दैट माइट बी ओरिजिनल। अगर आप रीअपॉइंटेड ऑन समवन्स प्लेस देन दिस पॉइंट 6 विल अपीयर, मे बी सम ऑप्शन होगा वहां पे। अटैचमेंट सिटी कॉपी ऑफ विच रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन आर एडेड। CRA3 में 4 सेक्टर्स, पार्ट ए टॉक्स अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन, पार्ट बी टॉक्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट ये दोनों तो 100% सेम है, बी एंड सी। और डी में अपने 6 पॉइंट्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सेकंड वन प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, वैल्यू एडिशन एंड जनरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, रेशियो एनालिसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिकंसिलिएशन ऑफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, रिमेनिंग अपन कंटिन्यू करेंगे कल, दैट इज कॉल्ड CRA4। तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें पूरा एक शॉर्ट में आई विल मेक यू राइट व्हाट इज CRA1 एंड 2। CRA1 एक बार लिखवा दूंगा, रेस्ट रिमेनिंग हाउ मेनी टाइम्स यू विल रिपीट इट और नॉट, दैट विल बी कंप्लीटली योर बर्डन। तो मेरा बर्डन है एक बार आपको पूरा एक बार थॉरोली में रीड करवाना। मे बी डे आफ्टर टुमारो, टुमारो इन द मिड सेक्शन ओनली विल बी एबल टू स्टार्ट अवर सम ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर संडे, I'll see you on Monday.